less, right? यदि एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देते हैं, you are getting my sound because this is completely new mobile and I am also somewhat not familiar with this one. Yashasvi? Yes. Okay. Are you there? Okay. Yes. So this is your methane with the formula CH4. Are you getting my voice clearly? Yes. Okay. Okay. So this is your methane with the formula CH4 and you are removing one of the hydrogen so that you will get the CH3. And now this carbon will have one of the valency that is open. So this is your open valency, not a minus or a dash. Now the name is also changed, that AN is replaced by YL. You have that methane with the formula CH4, one of the hydrogen is removed and in that case one of the valency becomes open and in that case that becomes methyl 1, right? Yes. Okay. Okay. Now this one is your second compound, that is ethane. Now in this ethane you will find that this is a primary carbon, this one is also primary carbon. Now I am removing one of the hydrogen from this CH3. If you are removing the hydrogen from this CH3, then this carbon will have one of the valency as an open valency. This is called as open valency. Now the name will be AN is replaced by YL. Here in this case primary carbon is used for removing the hydrogen. In this case also we have the only possibility of primary carbon from which you can remove the hydrogen. So this is also ethyl 1. Now if you go for this is your propane, CH3, CH2 and CH3. You know C3H8? C3H8? No. No? You can go through the earlier recordings. Earlier recordings are available on this app. Okay? If not, Yes. I will send you. Okay. So this is your propane, CH3, CH2 and CH3. That is a family of alkane we have studied in the earlier lectures. So this is your primary carbon. This is your primary carbon. From this or this you can remove the hydrogen. Suppose I am removing the hydrogen from this carbon, then this carbon will have the open valency and in that case, now this is called as N-propyl. Here the name changes propyl. AN is replaced by ANE from the name of alkane is replaced by YL. Now if you go for this is also propane. And now I am using this secondary carbon. Do you know the secondary carbon? Yes. Okay. The carbon situated in between two carbon atoms, that is your secondary carbon. Now if you are removing the hydrogen from this carbon, that is your secondary. Now on this side and on this side you will get the symmetrical parts. Equal parts are there. So this is the prefix that I can use as iso. That is for symmetry. Now this carbon having two hydrogen initially here and here, you will find a difference and now this valency will be open. Now this is your isopropyl. Now in this way we have the four alkyl groups. We have four alkyl groups that are obtained from the parent alkane as a methane, ethane, propane. Propane से दो alkyl group हमने generate किया है. Now, shall I wipe all these things? Yes. Okay. Now if you go for the butane, then there are number of possibilities. Initially हमने पहला देखा आज methyl as CH3 dash. इधर से भी हो सकता है open. Then we have that ethyl like this. Or sometimes you can write C2H5 dash. Ethyl ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. This is what N-propyl. The fourth one is. These are the four alkyl groups, right? And now the remaining are, you know, this one C4H dash is butane, right? And if you go through the structures of this compound, then I will write it as a straight chain initially. So can you write like this? Yes, this is your N-butane.
If you remove the hydrogen from this or this, यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, you will get. सर हाँ, हाइड्रोजन 11 हो गए. ओके, अब ठीक है, अब ठीक है. हाँ. बीच में कभी CH3 नहीं होता. ऑलवेज दो कार्बन के बीच में जो कार्बन होगा इधर CH2 होगा या फिर CH होगा. ठीक है, this is identification. Okay, now if you are removing the hydrogen from this these two positions, these are the primary carbon atoms from which you are removing the hydrogen. Okay, now this will be the alkyl group. यदि आपने इस इधर से फिक्स कर दिया और इधर से ऐसे उठा लिया इसको, then you will also get the same one. Now this is called as N-butene. Normal position. हमारे लिए terminal carbons are the normal positions. Now here these are the two carbon that are secondary one. ये जो क्रॉस किए हुए दो कार्बन दिख रहे हैं, these are secondary carbon and from which you are removing the hydrogen. यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो. Yes, this is the carbon that is used to remove the hydrogen. यदि मैं इसको फिक्स कर दूं, इसको उठा के ऐसे इधर से कर दिया, ऐसे इस साइड में कर दिया, तो you will get. इसमें हमने आइसो नहीं यूज किया, क्यों? बिकॉज इस साइड में दो कार्बन, इस साइड में एक कार्बन है, मतलब समवॉट अनसिमेट्रिकल टाइप में आ गया है. अनसिमेट्रिकल है इसलिए हमने इसमें आइसो नहीं लगाया. नाउ दीज आर द टू मोर अल्किल ग्रुप्स दैट कैन बी एडेड हियर, 5 and 6. Right? Now this is the chain of 4 carbon atoms, which is a straight one. Initially you are removing hydrogen from primary carbon, then you will get N-butyl. If you remove the hydrogen from secondary carbon, then you will get secondary butyl. In this way now you will have the list of 6. Right? Whenever you write the formula of any compound, you should be familiar with all these. Otherwise, you can't write the name of that compound. Okay, now the same one can be written in terms of another structure. CH3, C, H. Is it correct? 4 carbon atoms are there and 10 hydrogen. But this is your side chain. Side chain use किया. Now this compound is known as isobutane. You know LPG? Yes. Liquefied petroleum gas. Its constituents are butane and isobutane. दोनों एक साथ होते हैं. Butane and isobutane. Now if you consider this one or this one or this one for removing the hydrogen. If you remove the hydrogen from this, कहीं से भी निकाल लो, structure will be the same. यहाँ से निकाला तो भी same आएगा, यहाँ से निकाला तो भी यहाँ से भी. Means there is again symmetry, and in that case I will get this type of compound C. Not a compound, this is just a group. This is known as isobutyl. You got this one, isobutyl? Yes. Okay. Now one possibility is left here. You can use this carbon for removing the hydrogen. This carbon can be used to remove the hydrogen, and in that case this type of carbon is the carbon Tertiary. atom of which 3 valencies are satisfied by the 3 carbon atoms. In that case that will be called as a tertiary carbon. And now instead of this you are removing the hydrogen from this square box where there is a tertiary carbon, so the name will be tertiary butyl. And now this will be like this. This alkyl group will have the symmetry about CH3, 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 and middle में carbon होगा of which one of the valence is open. ठीक है. Now in this way आपके पास में एक isobutyl और third butyl आ गया, तो 8 alkyl group बन गए हैं. ठीक है. So shall I list out all these things? Yes. This is your
This is not in accordance with the names. I will write them again. So second one is your ethyl group. You can write like this, or you can have this one. Ethyl. This is a part of that compound. This is not a complete compound. एक छोटा सा part हम अलग करके study कर रहे हैं उसका. Third one is your and propyl. You can't collect them like this CH5. इसके जैसा इसको जमा नहीं कर सकते एक जगह पे, उसमें दिखता नहीं है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है. See the differences in the name. You can have open valency on this carbon or on this carbon. यहाँ से हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा. Okay, these are the 6th. Then 7th and 8th. Okay, I will write here. Yes, what was the name of this one? What was the name of this? Tertiary. No. No. N. No. This is isobutane. Right? And the last one is, see, very small difference is there in secondary and isobutane. Okay, what thing you have to do, you should know these 8 alkyl groups. So basically you get the board preparation with these 8 alkyl groups. Any compound can be obtained from this. Any compound. This is a major part of the formula of any compound that we have to study for the board point of view. Once you got this one, then you can go for the bigger compounds also. Understand? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो बेसिक कंपाउंड्स है हमारे पास में 11-12 की भी बात करते हैं आप तो भी मोस्ट ऑफ दी जो कंपाउंड्स है उसका ये मेजर पार्ट है फॉर्मूला का. और ये कॉमन नेम्स जो होते हैं वो नाम में भी इतना दिखेगा आपको. बस इसके आगे कुछ लगाना है यहाँ पे और यहाँ पे चेंज करना है तो नए नए कंपाउंड्स बनेंगे. दैट विल बी इन कॉमन नेम्स. But if you are preparing for the board, then that is more than sufficient. And if you go for the entrance, then also this will be the base for the compound. These are the bases for the compound. Once you have the base, then you can construct any huge compound and you can write the name of that compound. Okay? So, Yes. go for the next step. Once we have the alkyl group, यहाँ पे एक चीज आई थी बीच में, ब्यूटेन जैसा कंपाउंड था. Compounds having same molecular formula, C4H10 ही था. But having different structures. They are called as isomers. Iso means same and mer means molecular formula. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं. दो कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहा हूं. पहला this one is your N-butane and the second one is
This is known as isobutane. Now in both, formula is same, C4H10, but you will find that they have the different structural arrangement. ये हमारा butane है 1 2 3 4. Okay, you know this. Yes. Okay, and you know this. You know Yes. this. CH3 CH CH3 CH3. Okay, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है. This one, this type of representation is called as, yeah, this type of representation is called as, Lewis dash structure. no, this is a bond line formula. This is bond line formula. Is it not? Yes. In which lines and their points of intersections are used to represent carbon and hydrogen. Right? What should be there? CH3 here, CH2 again, CH2 यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, CH3 यहाँ पे क्या होगा? CH. CH and यहाँ पे CH3. This is the representation for. This will be the revision also. Okay, so you got this one? Yes. Okay, this is totally new thing. Just I was going by the way, I got this one, so just take it. Because most of the time I used to express these words, these are the isomers, and you don't know the isomer, then that will be problematic. Okay, so shall I wipe this? Yes. Okay. Now, once we have the alkyl groups, then we must have some functional groups. You know the functional group? Yeah, functional group. Now, are you familiar with this term or not? No. Okay. A single atom or a group of atoms. Single atom or group of atoms. Which imparts the properties of the compound will be due to presence of such a group. Such a group will impart properties to that compound. जैसे हमने इसके पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बोला था, दैट इज आवर ग्रुप. Carbon carbon single bond, that is alkane. If you get the carbon carbon double bond, then that will be alkene. Then carbon carbon triple bond is there, then that is alkyne, right? Example की तौर पर लेते हैं. If a compound contains, you know this one, this is not an organic compound, but just you know this one. Yes. Yeah, what is the name? Hydrochloric acid. Okay, hydrochloric acid, ठीक है. What about this? Table salt. Sodium chloride. Sodium, आगे Chloride. chloride. Okay, what is this? Potassium chloride, right? What about this? Calcium chloride. So now what should be the name of this? Hydrogen chloride. Yes, hydrogen chloride. This is a gaseous compound. आप जिस पहला नाम बताया आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब तक हम इसको पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता. ठीक है. Unless and until it is mentioned, it is aqueous, it will not be acid.
एसिड कब बोलेंगे हम उसको, जब ये पानी में बनाया हुआ सोल्यूशन होगा, बिकॉज दिस इज अ गैसियस कंपाउंड. So in all these compounds you have this one, chloride, right? Hydrogen chloride, sodium chloride, potassium chloride and calcium chloride. और भी बहुत सारे बना सकते हैं. Just we have the dealing with this Cl. That is a single item. Now see, instead of this I will write. Now what should be the name? Hydrogen bromide. Yes. In this case, this will be negative and this will be positive. Why this has a Yes. positive charge? Because it loses electron. Right. And why it has a negative one? It gains Because electron. Yeah, gains electron. So it carries a negative charge. So what should be the name of this? hydrogen bromide. Yes, correct. What is this? Sodium bromide. Bromide. This one. Potassium bromide. This one. Calcium bromide. Okay. In all these, you have this one. Bromide. Now instead of this, I will have this one. Now these are Iodide. iodides. Iodide. Right? इसके पहले कौन सा देखा था आपने? Chloride. Right? So in all अब तक का आपने 3 फंक्शनल ग्रुप देख लिया, एक Cl, दूसरा Br, तीसरा I. किसी भी कंपाउंड में इसमें से कोई दिखता है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड कॉमनली दे आर कॉल्ड एज halides. Chloride, bromide and iodide. You got this one? Yes. These are the 3 functional groups. These are the 3 functional groups. चौथा भी बता दूं आपको. So shall I write this one? Okay. Yes. Just check. Calcium oxide. Oxide, right? Oxide. So what should be charge on calcium? +2. +2. So oxygen will have -2. -2. Calcium oxide बोला है हमने. Yes, this is Sodium oxide. yes oxide. Again, both these sodium will carry, each of the sodium will have +1, +2, so -2, right? What about this? Water. What about? No. This is hydrogen oxide हमारे लिए तो. Is it not? Yes. Yes, this is the oxide of hydrogen. Oxide of hydrogen means you are dealing with the oxide particularly. So अभी आपके पास और एक ग्रुप आ गया. ये भी सिंगल आइटम है. देखिए हमारे डेफिनेशन में लिखा हमने सिंगल आइटम दैट विल इम्पार्ट द प्रॉपर्टीज. चलते आगे. You know this one? Sulfur. Complete compound. Ferrous sulfide. Sulfide is important for me, right? Now, Sodium sulfide. right? Hydrogen sulfide. All these cases you have this one as a sulfide. तो अभी देखिए आपके पास 3 और 2 5 फंक्शनल ग्रुप्स है ऐसे जिसमें सिंगल आइटम आपकी सारी प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा. अभी तो हम इधर गए नहीं डेफिनेशन की, यहीं पे अटके हुए हैं, सिंगल आइटम में अटके हैं अभी तो. ग्रुप ऑफ आइटम्स अभी आया ही नहीं है, आएगा. You know this? Calcium carbonate. Carbonate is important for me.
Carbonate. This is a group of atoms. Now यहाँ पे आ गए group of atoms. Sodium carbonate. So this is a group, right? Group of atoms. Carbonate हो गया. Yes. Calcium sulfate. Sulfate is important for me. What about this? Hydrogen sulfate. Yes, it's a hydrogen sulfate. Unless and until हम उसको बताएंगे नहीं कि एसिडिक सोल्यूशन है, हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोलेंगे. Okay. So this is important for me. Sodium Yes. hydroxide. Hydroxide is important for me. Water. H2O, right? Hydroxide of hydrogen. जैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड वैसा हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड नहीं बोलेंगे वाटर को, बोल सकते. Yes. So these are the groups that will provide you the properties of that compound. अब इसमें प्रॉब्लम ऐसे है कि these are इनऑर्गेनिक. इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं रहता, बहुत लिमिटेड है हम इनके साथ में. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं. You know these are these some functional groups. You are familiar with these. इसमें एक OH आया था. This is known as ऑर्गेनिक में चले जाएंगे तो this is called as hydroxy group. Okay, this is a group of two atoms. This one cyanide. अभी ऑक्साइड लिखा था आपने यहाँ पे ये वाला, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ये ज्यादा होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना. So this is your single atom with this. This type of is called as a bivalent oxygen. Yes, you know that bivalent oxygen, दो हाथ वाला ऑक्सीजन जिसका वैलेंसी दो है, and this type of compound is called as a ether, or you can say that is called as ethereal oxygen, because we are dealing with the organic. We are working with the organic, right? So these are some functional group. अभी तो मैंने 6 लिखे हैं. इनके नाम मालूम है आपको? You have that chloride. This one is your bromide. This one is iodide and sulfide. Right? A very few groups are there. अभी तो काम शुरू किए हैं हमने. बेटा ये सब ठीक है. फिर लिस्टिंग कर लेंगे और एक बार. Now the group of 3 atoms. CHO. इस टाइप में इधर में कुछ तो भी लगने वाला है, वैलेंसी ओपन है. इधर में आपका CH3 लगा सकते हैं आप, C2H5 लगा सकते हैं, and such type of group is called as अब किसी कंपाउंड को अल्डिहाइड कब बोलना है? जब उसके अंदर ये चीज होगा. This type of group will impart properties and that compound containing such group is called as a ketone. अब इधर से एक CH3 इधर से एक CH3 लगा दो, आपका एसीटोन बन जाएगा. You know एसीटोन? No. No. Okay, okay. ठीक है. So this next one is your group of some more number of atoms. This is
कार्बोक्सिल ग्रुप। कंपाउंड्स जिसमें इस टाइप का ग्रुप होगा वो हमारे लिए कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो जैसे टाइम जाएगा आगे वैसे वैसे यू विल बिकम फैमिलियर विद दिस कंपाउंड्स। जस्ट वी आर स्टडीइंग दी, और भी बहुत सारे हैं बट एट प्रेजेंट हम 4-5 पे काम करते हैं। ये क्या है? दीज आर दी ओपन वैलेंसीज, वेयर हमारा अल्किल ग्रुप हमने जो बनाया है वो यहाँ लगा देते हैं तो उतने कंपाउंड बन जाएंगे एक ही दिन में। एक दो तीन चार पाँच छः, और आपने अल्किल ग्रुप कितने बनाए? 8, राइट। 8 अल्किल ग्रुप में 8 ब्लैंक्स थी इस तरह की, हर एक में ये लगाते चल जाएंगे तो यू विल गेट 8 into 6। 48. Simply you can have the 48 compounds with these names and that 8 names or the formulas। ठीक है, तो अब एक कंपाउंड बनता है हमारा, ये मिटा देते हैं। ओके, Yes. दिस इज ऑल दिस आर ऑन रिकॉर्डिंग। Now once I have this one CH3, देखिए एक ग्रुप थोड़ी देर पहले किया था, दूसरा अभी किया हमने, इसका नाम होगा बन गया नाम, Yes. फॉर्मूला भी हो गया, नाम भी हो गया। अब Cl हटा दो, Br लगा दो, Methyl bromide. ब्रोमाइड, राइट। I लगा दो, Methyl आयोडाइड। iodide. बस यहाँ तक का ठीक है। इस टाइप का जब कंपाउंड आएगा तो उसके नाम में एक चीज आएगा अल्कोहल। देखिए अभी हम इसको बनाते हैं, मेथिल अल्कोहल, राइट। इफ यू यूज दिस वन, methylamine, if you combine with this, yes, is it over 5? Anything left? Yes, iodide is left, bromide is left. You can have that one. You can have instead of this bromide, you can have in of that iodide, right? See how many compounds you can have the formula and names. All these names are called as the common names. Now, if you go through, instead of this, you can use ethyl everywhere. Ethyl chloride, ethyl bromide, ethyl iodide, ethyl alcohol, ethyl amine, ethyl cyanide, ethylamine, and all that. You will get the number of compounds. In this way, how many compounds you can prepare now? 48. ये तो सिंपल वाले हो गए। Now see here, this is your chloride. You go to this one. Right? Can go for this also. Yeah, this one, Yes. methyl chloride. This one is
ethyl chloride. This one is n-propyl chloride. This one is isopropyl chloride. Similarly, you can go for the next. First of all, you should know the names of these parts. A major part है formula में. What is the name of this? N-butyl. And you are using the functional group as a Cl. Then this will be N-butyl. This will be N-butyl chloride. You can go for next. How many alkyl groups are there? 8. 8 alkyl groups. So compound कितना बनेगा? Chloride के combination से 8 compounds बन जाएगा. This one is secondary butyl chloride. Then you can go for this. Yes, what is the name of this part? What is the name of this part? Isobutane. Yeah, isobutyl. Then you can have this one. So can you write it Isobutane down? chloride. Yes, you got the name. This one is isobutyl chloride. Only one is left. Tertiary butyl chloride. Yes, so what should be there? मेजर पार्ट तो यही होगा फॉर्मूला का. इतना इतना मेजर पार्ट है. एक छोटा सा फंक्शनल ग्रुप लगा दिया आपने. एक छोटा सा फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, कंपाउंड बन गया. Got all these 8 compounds? Yes. Now in these 8 compounds, if you replace Cl by Br, then what should be the name? What should be the names? Bromide. कितने हो गए? 16. Right? Yes. Okay. Now instead of that, if you use the I, then 8 iodide. Yes. How many हो गया? 8 chlorides, 8 bromides, 8 iodide, 24 तो हो गया आपका. कहाँ से आया? Yes. सिर्फ 8 अल्किल ग्रुप और एक फंक्शनल ग्रुप आपने कंबाइन करके 24 कंपाउंड्स बना दिए. और बनाते हैं. ओके. A compound containing hydroxy group, a single hydroxy group, that will be called as an alcohol. All these are what? अभी जो किया हमने वो क्या थे? Alkyl halides. Alkyl. Yeah, alkyl halides के फॉर्मूला था so what is the difference between alkane and this one? यहाँ +2 रहता है तो ये नहीं रहेगा. अल्केन का कैसे होता है? जितना कार्बन उसका डबल +2 हाइड्रोजन, दैट इज योर अल्केन. अभी क्या हो गया? +1 मीन्स एक कम कर दिया मैंने, है ना? एक हाइड्रोजन कम कर दिया है. नाउ ओवरऑल दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटेड एज R-X. दिस इज व्हाट R is what? Representation of alkyl group. Short term notation. R कोई भी हो सकता. 8 है आपके पास में. 8 alkyl groups are there. उसमें से कोई भी हो सकता है एक R. X कितने हैं आपके पास? 6. Only 3. X for halogen or halide. This is for halide. Okay. So you have that 8 plus 8 plus 8. In this way 24 alkyl halides are there. If you go for this one, now what should be the name of this representation? Alkyl Fluoride. क्लोराइड. अब इसके 8 एग्जांपल्स आपके पास में आ गए. R की जगह आप रिप्लेस क्या करेंगे? CH3 C2H5 then CH3 CH2, मतलब वो 8 अल्किल ग्रुप जो है यहाँ पे लगा देते तो यू गेट 8 क्लोराइड्स.
Similarly, you will get, yes, what type of compounds? Alkyl bromide. Right. Then you will get this one. Again Alkyl 8, iodine. iodide. तो 24 तो बना लिया आपने आज ही एक ही दिन में, और बनाएंगे 8। तो ये मिटाए सब। Yes. ओके, ये 24 आ जाएंगे आपको। All these are the alkyl halides. Now we'll go for this type of category. Alcohol, organic compounds containing hydroxyl group. This is the representation. Can you go for this? Yes, what should be the name? Methane alcohol. Yes, correct. Next. Next. Methane alcohol. Uh-huh. Butane alcohol. Sorry, propane alcohol. Now, so what is the difference? See, what is the difference underlying? Methyl. This is not a methane or ethane or propane. These are not the alkane. These are the alkane with one hydrogen less. जहाँ एक हाइड्रोजन कम होता है वो alkyl group. This one is n-propyl alcohol. This one is isopropyl alcohol. So whenever alcohol term, ये जो word use किया हमने, कब use करना है? जब किसी कंपाउंड में ओपन वैलेंसी पे OH ग्रुप लगा है तो you can say it is alcohol. Understand? Yes. Okay. So again 1 2 3 4 हो गया, और 4 बन सकते हैं। 4 बना देते हैं। ओके, लास्ट वाले ही बना लेते हैं। What should be the name of this one? Tertiary butyl alcohol. Correct है। So now you have R-OH. R क्या है आपका? अल्किल ग्रुप है। अल्किल अल्कोहल बोल सकते हैं। कितने बनाए? 5। अब कितना हो गया आपका? 32 फॉर्मूलाज बना लिए आपने बैठे बैठे, और बनाएंगे। साइनाइड बनाते हैं। ओके, ये मिटा दे सब। Yes. This is what alkyl. This is what cyanide. This is alkyl cyanide. Now what you have to do? R is replaced by the 8 terms, and this alkyl word is replaced by the 8 words, right? Which are the 8 Yes. words? Methyl, n-propyl, isopropyl, n-butyl, secondary butyl, isobutyl, third butyl. These are the names of 8 alkyl group. मेरी स्पीड से आना चाहिए। Okay, see this one, methyl cyanide. Yes, n-propyl cyanide. You go for this. What should be the name? N-butane cyanide. Butyl cyanide. Yes. So you can go for the 8 RCN. Cyanides. कितना बनाया आपने? 8। कितने हो गए? 40. Okay. These are very simple compounds. Once you got the logic, then no one can stop you. अल्किल अमाइन बनाने जा रहे हैं अभी आप। ओके, yes, what should be the name?
Mi- No. Isopropane propylamine. Yes, correct. जानबूझ के पहले 2-3 ड्रॉप कर दिए, एकदम तीसरे पे आ गया, चौथे पे आ गया. Yes. Secondary butylamine. चलो इसको भी 8 में गिना लेते हैं. अब कितने हो गए? 48. 2 less 50. 2 less than 50, no? Yes. So in all 6 फंक्शनल ग्रुप हमने यूज किया है, और यहाँ पे जितने फंक्शनल ग्रुप लगाए उसका वैलेंसी एक ही था. फंक्शनल ग्रुप का वैलेंसी एक ओपन था, अल्किल ग्रुप का भी वैलेंसी एक ही ओपन था. अब मेरे पास दूसरे टाइप का कंपाउंड है. ये दिस इज नोन एज इथरल ऑक्सीजन. देखिए 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं आप तो वाटर हो जाता है. इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वाटर बनेगा. लेकिन नहीं, वाटर नहीं बनाना है, हमको तो कुछ नया बनाना है. डायल्किल डायल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर. वाटर का डेरिवेटिव मतलब वाटर से कंपाउंड बनाने. देखिए पहले क्या था हमारे पास में, ये हाइड्रोजन ये निकाल देते, इसके बदले में ये लगा देते हैं. Both hydrogen from water are replaced by the alkyl group. So you are deriving that compound from water. Water is the source from which you can replace these 2 hydrogen and you can replace them by alkyl group, and then in that case that compound will be called as ether. अब ये ईथर बनाते हैं, देखते कैसे बनते हैं. ईथर कब बोलेंगे हम? जब इस तरह का ऑक्सीजन हो, इसके इधर से और इधर से लगना चाहिए. These are the 2 alkyl groups which may be same or different. Now in that case the compound will be like this. Yes, CH3, OCH3. Now this is what? Dimethyl ether. You can use this one. What should be the name? Name? Methyl. No. Di. This is Diethyl ether. right. And now you have finished the 50. 50 फॉर्मूला आपने कर लिया यार एक ही दिन में. क्या था बेस उसका? 6 या 7 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और 8 अल्किल ग्रुप. इनका जस्ट आप कॉम्बिनेशन करते हैं. इन दैट केस यू विल गेट देयर अबाउट 50 कंपाउंड्स, राइट? Yes. So for combination you need to know these 8 alkyl groups. First of all, just I will revise. मिथिल जब बोल रहे हैं आप तो उस कंपाउंड में इतना तो होना चाहिए, है ना? और इथिल बोलते हैं उस कंपाउंड में इतना पार्ट होना चाहिए. 3 अलग अलग तरीके से लिखा है हमने C2H5 को. इधर से भी लगा सकते, इधर से भी लगा सकते, यहाँ पर भी लगा सकते. ऑल दीज आर द सेम, दैट इज
ethyl. Then we have n-propyl. This one. Then we have isopropyl. Like this. Then we have n-butyl. थोड़ा आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन चीजों की. ये सारा वर्कआउट करने के लिए इनिशियली आपका राइटिंग प्रैक्टिस रहा ना, तो आपका ऑर्गेनिक कोई पकड़ नहीं पाएगा. नेक्स्ट वन इज योर सेकेंडरी ब्यूटीन. बट राइटिंग में बहुत परफेक्शन चाहिए. नेक्स्ट वन इज योर isobutane. This bond with this carbon. And the last one is these are the 8 functional groups. Sorry, these are the 8 alkyl groups. So इन चीजों का राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए आपको बस. Once you have the writing practice of all these things, then you can write any kind of name or the formula. Okay, these are the 8 alkyl groups, right? That are very useful. जनरल जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए इतना काफी है. So shall I wipe all these things? Yes. Okay. Then we have some functional groups. तो किसी के नाम में क्लोराइड बोल दिया है आपने, तो फॉर्मूला में भी तो Cl आना चाहिए ना. जब बोला है क्लोराइड तो फॉर्मूला में Cl दिखना चाहिए. जब मिथाइल बोल रहे तो फॉर्मूला में CH3 दिखना चाहिए. एन ब्यूटिल बोला तो उसके अंदर एन ब्यूटिल दिखना चाहिए. नहीं तो आप नाम लिखेंगे एन ब्यूटिल और फॉर्मूला कुछ और होगा, तो वो मैच नहीं होते, राइट. ऑर्गेनिक में ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है वो OH. हाइड्रोक्साइड नहीं बोलना है, ठीक है. Yes. किसी नाम में आपको अमाइन लिखा हुआ दिख रहा है तो फॉर्मूला में ये दिखना चाहिए. नाम में साइनाइड है तो ये दिखना ही चाहिए. कई सारे कंपाउंड्स आप बना सकते हैं. ये बहुत कम लिखे हैं मैंने, इतने नहीं लिखे जितने हैं. लिखते हैं. ऐसे भी लिखते हैं. जब किसी कंपाउंड में इस टाइप का ग्रुप दिखेगा तो हम उसको अल्डिहाइड बोलेंगे. एंड दिस वन इज अल्डिहाइडिक ग्रुप.
एक दे दो और okay. तो ये 10 फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट मैंने बना के दिया है आपको, ठीक है। और जो अल्किल ग्रुप है वो आपके है 8, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का बहुत कुछ करेंगे। इसको अल्किल ग्रुप के साथ जोड़ के जो कंपाउंड बनता है उसका रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, ठीक है। तो shall I wipe all these things? Yes. Okay. You know alkane. So can I have this one as R dash H? R क्या होगा आपका CH3? R की जगह Alkyl. CH3 रखो। हाँ, CH3 और एक H मिला के कितना हो गया CH4, दैट वाज योर मीथेन। उल्टा चलते C2H5 ले लो और एक H बढ़ा दो, कितना हो गया C2H6, दैट बिकम्स इथेन। सो दिस इज व्हाट कंपाउंड एंड इट्स जनरल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट सबसे पहले हम जाएंगे इससे पहले ये मेन है आपका सब में, इसी से सारे कंपाउंड बनाए आपने, ठीक है। देन हमने इसी से एक दूसरी चीज बनाया, ये कंपाउंड नहीं है, दिस इज नॉट अ कंपाउंड। ये जो है ना ये हमारे लिए कंपाउंड नहीं है, ये ग्रुप है सिर्फ हमारे लिए। अब फिर आपने इसके बहुत सारे कंपाउंड बनाना शुरू कर दिए। हैलाइड, अब इसमें भी 3 है, क्लोराइड बनेंगे, ब्रोमाइड बनेंगे, आयोडाइड भी बन सकते हैं, एक्स की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ दिस इज योर अल्किल अल्कोहल, चाहे जितने बना लो। So these are monovalent functional groups, ये वाले एकदम जनरल वाले कंपाउंड्स हो गए। आर की जगह आपके पास में 8 फॉर्मूला है, कोई भी लगाइए, नाम जोड़ दो एक दूसरे के साथ, यू विल गेट द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। एक और देखा कि आज हमने यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो बाईवैलेंट है, ये वाला, ठीक है। और 2-3 देखे हमने, उनके नाम ये हिसाब में नहीं आते, जैसा हमने जो नाम बनाया ना 50 लोगों के जो नाम बनाया ना, वैसे नाम नहीं आएंगे यहाँ से आगे। अल्डिहाइड का नाम कुछ अलग तरीके से रखा जाता है, कीटोन का अलग रखा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग रखा जाता है। तो वो स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट तो कर देंगे हम, लेकिन उनके नाम वैसे नहीं बनेंगे जैसे हमने 50 लोगों के नाम रखे अभी। यहाँ से ऑनवर्ड जो है ना कंपाउंड तो है 7-8, लेकिन उसका नाम जो है हम वैसा नहीं रखते जैसा अभी 50 लोगों के नाम रखे ना, इधर तक का रख सकते। यहाँ से आगे इनके नाम रखने के लिए थोड़ा सा अलग पोजीशन हमको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद कीटोन आएगा, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, उसके बाद ईस्टर आएगा, एंड इन दिस वे सीरीज बढ़ता ही जाएगा। अभी नहीं बढ़ाएंगे हम, यहाँ पे अल्डिहाइड तक का आ गया। यस, इसका नाम आप उस प्रकार में नहीं रख सकते, इसका भी नहीं रख सकते, यहाँ तक चल जाता है आपका। यहाँ तक भी आप यदि आते हैं तो इसके आपने बनाए 24,
इसके बना बना के आड़ बना लेंगे, बनते नहीं ऐसे। हम्म, 48 हो गए। और 2 एग्जाम्पल मैंने इसके बताए थे आपको, राइट। तो इन दिस वे 50 कंपाउंड आप आराम से घर में बैठ के बना सकते पेपर पे, और उनके नाम लिख सकते हैं। So will you make a list of these 50 compounds with their names and formula? Yes. Okay. If you have any kind of difficulty, then you can go through the recordings. And now we will take a pause for today. Okay. Tomorrow we will continue at 8:30. Okay. चलो bye. यहाँ रुकेंगे. So shall I end one? Okay.